Okay, done with the present marking. See, I'm gonna instruct you something. No, no, it was me only. For recording, I have to join from the browser now. That's why. Okay, it was me only. Yes. See, today I'm facing some electricity issue. तो अगर uh, बीच में वाईफाई चला जाता है, so आपको लीव नहीं करना है. जस्ट वेट, आई विल बी जॉइनिंग दैट विथ माय मोबाइल नेटवर्क. ओके, सो डू नॉट लीव. एंड अगर उससे भी आवाज नहीं आ रही तो आई विल पुट अ मैसेज इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सो दैट यू विल नो दैट हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं. ओके, सो मृणाल 6, श्रेयांशी 5. Yes, put your presenting. You have already. Have you written the presenting? It's fine. क्योंकि मैंने इस आईडी से अभी ज्वाइन किया तो मुझे नहीं दिख सकता डायरेक्टली. ओके, ओके, अगर आपने लिख दी है प्रेजेंटिंग तो इट्स फाइन. वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड 5. लेट मी नो सारे स्टैंडर्ड के बच्चे प्रेजेंट है ना? एवरी स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज देयर राइट? 5th, 6th एंड 7th. All three standard students are present. Yes. Okay. Okay. So we will be starting with standard 5th. Your lesson number 1 is done. Yes. Standard 5th, your lesson number 1 is done. So let's start with your lesson number 2 today. Okay. So a snake charmer's story. Do you know who is a snake charmer is? Yes. Anyone can answer. 6th, 7th, 5th, you. Anyone can answer. Do you know who's a snake मैम, charmer? एक्सक्यूज मी Yes. मैम. Yes. मैम, स्नेक चैमर इज जो सांप लेके चलता है एक टोकरी में. Okay. Yes, आप आंसर देने से पहले बेटा raise your hand, okay, or write your name in the chat box, like Ishan did just now. Yes, Ishan, did you answer this question? Okay, one who controls the snake by his brain. Okay, let's see. And do you all believe in this? कि वो बीन बजा के स्नेक को कंट्रोल कर सकता है? Do you think so? No. Very good. And you know reason behind this? Yes, what's the reason? Ishan, you can put on your mic if you want to tell, or if you are comfortable writing in the chat box, then you can write. Yes, be fast. It's 6:10, and I have my 7 p.m. class also. Okay, I'm asking के वो बीन बजा के कंट्रोल नहीं कर सकता, ये आप मानते हो, राइट? सो आप किस बेसिस पे ये मानते हो कि नहीं कर सकता? यस, नेक्स्ट कांट लिसन, दे कैन फील द वाइब्रेशंस. यस, आई एम आर्यनाथ. I can do something special which I'm sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. So Aryanath is saying कि आप लोग जो नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ. That I can play a bean. हम में से कोई भी बीन नहीं बजा सकता, I think. Can you? Yes.
Can you? No, we cannot. No, we cannot. Yes, we can blow air into that, but we cannot play it like on the the soundtrack or what, right? We can blow. Yes, yes, we can play flute. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. So वो हमें कह रहा है कि हमें बीन बजा के स्नेक्स को डांस करना मैं स्नेक्स को डांस करवा सकता हूँ. I have learned this art from my family members. We people are known as Kalbeliads. Yes, is this the right word? I'm reading this first time. Kalbeliads is the right word? Yes, na? Okay. यस सो वो बता रहा है कि मैं हमारे फैमिली मेंबर से ये सीख कर आया हूँ और हम लोगों को कलबेलियास बोला जाता है. माय ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वाज फेमस अमॉन्ग्स आवर पीपल. सो जो मेरे दादाजी रोशन नाथ जी थे वो हम लोगों में सबसे ज्यादा फेमस थे, मशहूर थे. वी कुड इजीली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक्स. हम लोग कोई भी पॉइजनस स्नेक को पकड़ सकते थे. ही टेल्स मी मेनी स्टोरी अबाउट हिज पास्ट. कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स. सो वो हमें कुछ स्टोरी सुना रहा है उसकी. ओके, ये जो डिजाइन है उसके बारे में बोला गया है. ये नाग गुम्फन, इस डिजाइन को नाग गुम्फन बोला जाता है. जो रंगोली में यूज की जाती है और एम्ब्रॉयडरी में भी यूज की जाती है. वॉल डेकोरेशन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया में. इज देयर एनीवन फ्रॉम दिस रीजन? आपने कभी ये देखी है? अगर कोई है उस रीजन से तो क्या आपने ये अपने आपके यहाँ पे देखी है? आई हैवंट बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र. गुजरात, सौराष्ट्र या फिर साउथ से कोई है हमारे यहाँ पे? नो. ओके. ओके फाइन. Dadaji remembers. From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been saperas, that is snake charmers. The sapera, yes, sapera word हम हमेशा फिल्म्स में वगैरह देखते हैं. सो वो बता रहा है कि मेरे दादाजी और मेरे पर दादाजी, उनसे हमारा ये जो सपेरा का जो भी खेल है या फिर जो भी काम है वो चलता आ रहा है. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो इस वजह से स्नेक्स हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. हम एक बैम्बू बास्केट में, एक टोकरी में स्नेक को लेकर घूमते हैं. आपने कभी देखा है ऐसे बैम्बू बास्केट्स में स्नेक को लिया हुआ? अभी तो ये सब स्टॉप हो गया है cause it's illegal to keep. Yes, it's illegal to keep, so you cannot see, but in my childhood I have seen this. In the vacations when we visit to our nanny's house, one man came there. He always used to come there wearing the orange clothes and all, and he used to take rice from us, very small amount of rice he used to take from us, and he will show by opening that वो ढक्कन निकालता था उस कटोरी का एंड हमें स्नेक दिखाता था. वो बीन वगैरह कुछ बजाता नहीं था. आई हैव नॉट सीन प्लेइंग बीन एंड ऑल. ये तो सिर्फ आई थिंक आपने भी और मैंने भी सिर्फ पिक्चर्स मूवीज में ही देखा है, फिल्म्स एंड मूवीज में ही देखा है. लेकिन वो सिर्फ उसको टोकरी का ढक्कन निकाल के हमें दिखाता था और ढक देता था. ओके. यस. सो वो लोग ऐसा काम करते थे. इवन आफ्टर द शो, yes, whenever we stop in the village, a crowd would gather around us. We would then take out our snakes from our basket. तो वो हमें बता रहा है कि जब हम किसी भी गांव में रुक जाते तो हमारे यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो जाती, हमारे आजू बाजू बहुत भीड़ जमा हो जाती. और हम लोग
हमारे सांपों को बास्केट से बाहर निकालते. Even after the show, people would stay on. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. Okay, this one are ये कुछ ज़्यादा ही अलग है. इसके बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा था. सो हम लोग एक साथ पढ़ते हैं. ओके. तो वो बता रहा है कि शो खत्म होने के बाद भी लोग रुक जाते थे. लोग रुकते थे वहाँ पे. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास जो टिन बॉक्स है उसमें मेडिसिन है, दवाइयाँ है. वी मेड दिस मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. और वो बता रहा है कि वो जंगल से कुछ लाइक जड़ी बूटी, ये शब्द तो आपने सुना होगा. जड़ी बूटी ये वर्ड सुना होगा. यस. सो वो बता रहा है कि यस, कभी कभी हम लोग फॉरेस्ट से कुछ प्लांट्स जमा करके उनकी मेडिसिन बनाते थे. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. मैं ये सब मेरे दादाजी से सीखा हूँ. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेर फार ऑफ. सो उस ज़माने में जो भी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स थे, आज भी कुछ ऐसे गाँव हैं जिनको डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स बहुत दूर जाना पड़ता है उनको अ कुछ अगर बीमारी हो तो दिखाने के लिए. सो वो कह रहा है कि अगर मेरी दवाइयों से लोग अच्छे हो जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता. इन रिटर्न पीपल विल गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स. सो उसके रिटर्न में लोग उन्हें कुछ पैसे या फिर कुछ ग्रेन्स देते. इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ. और इसी तरह से हम अपनी लाइफ मैनेज कर पाते हैं. ओके. सो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बिकॉज आई हैव टू टीच सिक्स्थ एंड सेवेंथ ऑल्सो. दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आई थिंक. यस. यस, सेवेंथ वालों को तो पता होगा. सिक्स सेवेंथ वालों को आप अपने लास्ट ईयर ये सीखे होंगे. राइट. यस ईशान. यस. ओके. ओके चलिए. सो नाउ फिफ्थ स्टैंडर्ड हमने अभी जो भी सीखा, क्या आप सबको समझ में आया है? श्रेयांशी, हरकीरत, have you understood everything whatever I have taught you just now? Arnav? Okay. So let's move to the standard 6 because it's already 6:19 now, so we cannot waste time. Okay. In the next lecture, we will be continuing with fifth only first, and we'll try to complete the lesson. Okay, standard 6, we have started your lesson number 2, right? The component of food. Yes, Avneet, am I right? Yes. The starch wala test we have learned about, right? Okay. So now test for protein. Yes, do you remember? Am I right? I have taught you till here. The starch test we have learned about. Yes. Okay. So test for proteins. Take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. So प्रोटीन के टेस्ट के लिए आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम लेना है. अगर वो सॉलिड है तो उसको आपको पाउडर में कन्वर्ट करना है या फिर पेस्ट बनानी है. ग्राइंड और मैश a small quantity of the food item. Put some of this in a clean test tube and 10 drops of water to it and shake the test tube. उसकी पेस्ट बना के हमें कुछ मटेरियल टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें 10 ड्रॉप्स पानी डाल के उसको शेक करना है. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? फिर आपको caustic soda और copper sulfate डालना है. 10 drops of caustic soda and 2 drops of copper sulfate डालना है. So what do you see? क्या पता लगेगा आपको? हैव यू डन विद दिस टेस्ट? प्रोटीन का टेस्ट किया है लैब में? यस. सो व्हाट कंक्लूजन वी विल गेट? अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या होगा?
या फिर अपसेट है तो क्या होगा? कैन यू टेल? हमने उसमें कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा डाला है, सो अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो व्हाट विल हैपन? विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स. Shake well and let the test tube stand for few minutes. What do you see? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicate presence of protein in the food item. अगर आपके फूड आइटम में प्रोटीन है तो वो फूड आइटम वो टेस्ट ट्यूब में जो भी मटेरियल है, ओके फाइन ईशान, तो वो वॉयलेट हो जाएगा. ओके अगर डार्क ब्लूइश ब्लैकिश हो रहा है तो आयोडीन है, एंड अगर वॉयलेट हो रहा है तो प्रोटीन प्रेजेंट है. ओके जस्ट अ सेकेंड. ओके ओके सो ये टेस्ट हम स्टार्च प्रोटीन एंड फैट के लिए जो भी हमें ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि फूड आइटम्स दिए, रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडर राइस, कुक राइस, ड्राई कोकोनट, पुअर दाल, cooked dal, a slice of any vegetable, slice of any fruit, boiled egg, उन सब मटेरियल्स पे कर सकते हैं. ओके सो आई थिंक स्कूल में ये आपसे स्कूल की लेबोरेटरी में करवा के लेंगे. ओके नाउ फैक्ट्स. टेस्ट फॉर फैक्ट्स. Take small quantity of food item, wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. अभी आपको फैट्स का जो भी, अगर आपके फूड में फैट्स है या नहीं वो देखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसको फूड आइटम को क्रश करना है रैप करके, और हमारा पेपर फटे नहीं इसका ध्यान रखना. नाउ इट्स 6:24 and still someone is asking to join. I don't know what they are doing. फिफ्थ स्टैंडर्ड वालों ने लेफ्ट किया? नो ना? You're not going to leave the class until and unless I told you to throw. See, you're not going to leave the class until and unless I told you to do so. No, you are not going to leave. लास्ट टाइम बहुत लोगों ने ऐसे किया कि फिफ्थ, जब आई वॉज टीचिंग टू सेवेंथ स्टैंडर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स वाले वर लेफ्ट. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. Yes, someone has joined just now. Aryan, Aryan, you are from which standard? मैम 6. Six. Why you are joined so late? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम. Okay, fine. Okay, now pay attention. I'm teaching to sixth only. Okay, so what we have to do is now straighten the paper and observe it carefully. आपको वो पेपर को straight करना है and उसका observation करना है. Does it have an oily patch? Fatty substances किसमें, fatty acids किसमें होते हैं? Fats किसमें present होते हैं? बताइए. Fats containing food material कौन से है? Oil, cheese, butter and all. Okay. अगर कोई भी चीज आप लाइक टिश्यू पेपर या फिर किसी भी पेपर में रैप करते हो और उसमें थोड़ा सा भी ऑयल है, तो आप देख सकते हो कि आपका जो पेपर है वो ऑयली नजर आता है. हैव यू नोटिस्ड?
यस, ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लाइक कभी-कभी टिफिन बॉक्स से कुछ गिर जाता है तो बैग बैग में जो बुक्स है, पेपर है, उसमें भी लग सकता है। यस, सो इट्स अ कॉमन एक्सपेरिमेंट, हमें ये करने की भी ज़रूरत नहीं। सो अगर ऑयली पैच है तो वो क्या है, फैट्स प्रेजेंट है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, are you able to see the light faintly through this patch? An oily patch on paper shows that the food items contains fat. अगर ये हमारे पेपर पे ऑयली पैच नजर आए, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे फूड मटेरियल में फैट्स प्रेजेंट थे। The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. एंड डायरेक्टली आपको ये इस कंक्लूजन में आप नहीं जा सकते। अगर आपका फूड आइटम में थोड़ा सा भी वाटर का क्वांटिटी हो, पानी का क्वांटिटी हो, तो वो भी तो अपने पेपर को गीला कर सकता है। सो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे हमें ऑयल से भीगा हुआ एंड पानी से भीगा हुआ पेपर डिफरेंशिएट करना आता है, राइट? आपको आएगा डिफरेंशिएट करना? यस। अगर आपके पेपर पे ऑयल गिरा है, यस, ओके, सो सी, तो अगर पानी गिरा है तो फिर से वो उस टेबल को आप सॉरी उस पेपर को आपको सुखाना है और बाद में सिर्फ फिर वो फैट्स का टेस्ट करना है। अगर फिर भी ऑयली पैच नहीं आ रहा है तो आपके फूड मटेरियल में फैट प्रेजेंट नहीं है, और अगर ऑयली पैच आ रहा है सो योर फूड मटेरियल इज कंटेनिंग फैट। व्हाट डू ऑल टेस्ट शो? आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? We tested food items for three nutrients: carbohydrate, protein, and fats. There are also other nutrients like vitamin and mineral that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? Sorry, हमने जो भी मटेरियल्स फूड मटेरियल्स चेक किए, उनमें हमें प्रोटीन्स, फैट्स एंड स्टार्च दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स नजर आए। और भी कुछ होते हैं जो न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करते हैं, जो है विटामिन एंड मिनरल्स, राइट? सो हमें ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी जरूरत क्यों है? Why do we need all the nutrients in proper proportion to be fit and healthy? Yes, we require minerals and vitamins for repair and maintenance of our body and to keep away many diseases. Vitamins are specially to keep away many diseases. So what do various nutrients do for our body? ये सारे जो nutrients है वो हमारी body के लिए क्या क्या करते हैं? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Fats also gives us energy. In fact, fats gives much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. सो मेन हमारी जो एनर्जी प्रोवाइडर्स का काम कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एंड फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। सो जिन फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। जो भी बॉडी की ग्रोथ है, रिपेयर है, उन सबके लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सो जिससे प्रोटीन मिलते हैं, आप अगर जिम ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा ये सारे चीजें क्यों इम्पोर्टेंट होती है, राइट? क्योंकि प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। सो ये सारे जो सब्सटेंसेस है उनमें प्रोटीन्स मिलते हैं। सो हम अभी वी विल सी द सब्सटेंसेस, द फूड मटेरियल
which are sources of the nutrients. ये है फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स. सो हमें स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, इन ये सारी चीजों से, ये सारे फूड मटेरियल से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. Now we'll come to oils. Sorry, some sources of fats. Fats have two types of sources, plants and animal sources. So plant sources होते हैं groundnut, nuts, almonds and all. तिल, sesame seeds, तिल, coconut oil, sunflower oil, mustard oil, soybean oil, जो भी हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ये सारे हुए फैट्स के प्लांट सोर्स. और ये एग, फिश, मीट, मिल्क, घी, बटर, क्रीम, ये सारे हुए एनिमल सोर्स. किसके? फैट्स के. ओके. देन हियर वी हैव प्रोटीन्स. सोर्सेस ऑफ प्रोटीन जो भी प्लांट एंड एनिमल सोर्स में डिवाइड किए गए हैं. प्लांट सोर्स है पीज, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, इनमें से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं फॉर वेजिटेरियंस. एंड who can have both veg and non-veg material. पनीर, एग्स, फिश, मीट, मिल्क, ये सारे प्रोटीन के सोर्स होते हैं. उसी तरह से विटामिन्स. विटामिन्स हमें पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क एंड फिश ऑयल से मिलते हैं. Rice, liver, and wheat can also gives us vitamin. Okay, every vitamin is situated in different kind of food and food material. Okay, so आपको प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलते हैं समझ में आया है? हैव यू अंडरस्टूड सिक्स स्टैंडर्ड? ओके, चलिए राइट द नेम्स ऑफ फूड मटेरियल विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो फूड मटेरियल के नाम चैट बॉक्स में लिखिए. चलो बी फास्ट. कॉर्न, ब्रेड एंड बनाना. Okay, from sugars you can get. And now tell me about proteins. प्रोटीन्स किस में से मिलते हैं? प्रोटीन्स के प्लांट एंड एनिमल सोर्स लिखो. फिश, एग, मीट, चिकन, लिवर, मीट, एग, मिल्क. ओके. एंड फैट्स. फैट्स किस में मिलते हैं हमें? मैम मैम रिपीट द क्वेश्चन. आपको फैट्स रिच फूड के नाम लिखने हैं. हमें फैट्स कौन कौन से फूड मटेरियल्स से मिलते हैं? ऑल टाइप ऑफ ऑयल, बटर, चीज, पनीर. यस. ओके. ओके. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सिक्स स्टैंडर्ड. आपको ये सारे सोर्सेस अभी अपने बुक में लिखने हैं. एनिमल एंड प्लांट सोर्सेस फॉर फैट्स, एनिमल एंड प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, ये तीनों आपको अपनी बुक में लिखने हैं. नाउ सेवेंथ स्टैंडर्ड रेज योर हैंड or write your name in the chat box. Only Ishan is there. Okay, Ishan, we are about to finish your lesson. So let's start.
Okay. Uh, Now we have learned till yes, saprotrophs have done yes 1.5 from 1.5 we have to start, right? How nutrients and are replenished in the soil. हमने देखा कि कहाँ कहाँ से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. Yes, and now yes, Shreyanshi, you have raised the hand. Any problem? Want Yes, to say ma'am. something? Yes, ma'am. Yes, Ma'am, the book is not same as mine. you are in fifth standard, right? Yes. So whatever I have taught you, it's not for you. Yes. This is not in my book. Okay, actually, see, we are following the NCRT syllabus, right? Yes. Yes, we are following that syllabus, and as you are for the CBSE board, na, every Yes, ma'am. school according to state defines their own syllabus. So I can't do that. I can't do anything with that. So if you want to attend science lecture, you can. Otherwise, it's up to you. It's totally free, right? If you want to attend, you can go on. Otherwise, yes, it's up to you. No. Yes. So we have learned about the nutrients and all, how plants get them. Yes. Now, how these nutrients are replenished in the soil. ये जो सारे nutrients है, वो soil में किस तरह replenished होते हैं? Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? आपने कभी देखे हैं ईशान मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हुए फार्मर्स को? वेयर आर यू फ्रॉम ईशान? ईशान, वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, पुणे. मग तर तू बघितलं असणार, राईट? येस. ओके. You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil. So their amount in the soil keep on declining. हम ये पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से ही उनको प्लांट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है. सो अगर कोई चीज बार बार यूज की जाती होगी तो वो खत्म भी तो होती होगी, राइट? सो सेम थिंग इज इन दिस केस. सी, their amount of nutrients and minerals in the soil is declining. वो कम होते जा रहे हैं. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. तो जो fertilizers and all gardener and ये सारे फार्मर्स यूज करते हैं, उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की तरह और भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. And अगर आपको अपनी सॉइल की जो एनरिचमेंट है वो बढ़ानी है, फर्टिलिटी बढ़ानी है, तो उसको एनरिच करने के लिए ये टाइम टू टाइम ऐड करने बहुत ज़रूरी होते हैं. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. अगर प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर देते हैं तो हमारे प्लांट्स हेल्दी होंगे. यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब a lot of nitrogen and soil become deficient in nitrogen. जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रेन्स, जो भी ग्रेन्स, राइस, व्हीट एंड ऑल, वो जो जमीन का जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. See, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर में प्रेजेंट है, लेकिन अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स नाइट्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इजीली यूज नहीं कर सकते हैं, वो सॉल्युबल फॉर्म में ही रिक्वायर होता है. सो bacterium called rhizobium can take the atmospheric nitrogen and convert it into a usable form.
सो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, जो नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। वो अ, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो फॉर्म प्लांट्स इजीली यूज कर सके। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। सो राइजोबियम खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. So वो क्या करता है, रूट रूट पे जो छोटे छोटे व्हाट यू कैन से नोड्यूल्स होते हैं, उसमें ये जाके रहता है और उन प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। सो फूड क्या खाना बना के चम्मच से खिलाते हैं क्या उनको? नहीं। जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो ये राइजोबियम एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उसको एक व्हाट यू कैन से उसको एक रहने की जगह भी मिल जाती है। सो दिस एसोसिएशन इज दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उनकी ये जो रिलेशनशिप है उसको सिम्बायोटिक कहा जाता है। मतलब दोनों में दोनों को फायदा हो रहा है, राइट। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये जो एसोसिएशन है उसका फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। सो जहाँ पे वो ऐसे ग्राम्स, पीज, मूंग, बीन ऐसे प्लांट्स लगाते हैं, तब वो नाइट्रोजन का थोड़ा कम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर ईशान? Yes, ma'am, clear. ओके। In this chapter, you learn that most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? Yes, Ishan? Yes, ma'am. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because they're dependent on the insects, right? Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay, so some of the questions we will do today and some on the other day, okay? Because they are too much and Okay, you are ma'am. only one to answer. Tell me, why do organisms take food? For the means we can say the repair and the maintenance of the plants, right? For example, the leaf prepares this food. So after that, other parts are also there, right? Which need food, and they also perform various actions. Yes, I'm asking generally you can tell about organism, not specifically plants. But Okay. why does I'm asking कि organism को food की जरूरत क्यों होती है, किसी भी organism को? Yes, ma'am. As I told you, like for the repair and maintenance of the Yes. body and the growth of the body. Okay, very good. Now tell me the difference between parasite and saprotroph. Yes, so parasites are types of means you're talking about insects or insects only, right? Yes, Yes, ma'am. So parasite and saprotroph. yes, ma'am. Inside parasite, there are two types of parasites. The one parasite which lives inside the organism, and the second one which lives outside the organism. The one which lives inside the organism is like the tape worm, which is inside our stomach, for example, and the outside one is the example of a leech. It sucks blood. So the Okay. difference between them is the parasite has two types. And can you tell the second one? Can you please show the question? Saprotrophs. Actually, I don't remember. So can you please tell? Yes, Okay, ma'am. I'm going to show you. You can read Yes, ma'am. here. Yes, yes, yes.
The organisms are called fungi. They have different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter, is called saprotrophic nutrition. Such organisms with saprotrophic nutrition are called saprotrophs. Fungi Yes. also grow on pickles, Okay, okay, leather. fine, fine, Okay. fine. We just wanted to know about the saprotrophs, right? Yes, ma'am. ओके, अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है तो आप किस Hmm. तरह से है या नहीं, किस तरह से हाउ यू विल फाइंड आउट, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ starch in the leaves? Number performing the iodine test. Yes, very good. Now, okay, we will take fill in the blanks. So it's 47 and I have my 7 p.m. class also. So fill in the blanks. Green plants are also are called dash dash since they synthesize their own food. They are also called as mm, Green plants are called dash dash since they synthesize their own food. synthesize their own food. Autotrophs. Autotrophs, yes. Yes, ma'am. Then the food synthesized by plants is stored as Starch is stored in the form of starch. in photosynthesis. Solar energy is absorbed by the pigment called Chlorophyll. Chlorophyll. during photosynthesis. Plants take in dash dash and release dash dash gas. Carbon dioxide, also known as CO2, and release oxygen. The formula of oxygen is O2. Very good. Okay. So what you have to do is question number 6 and 1, 2, 3. Yes. आपको ये लिखने हैं नोटबुक में. And have you joined the Google Classroom? Everyone, everyone, have you joined the Google Classroom? आपको invitations भेजे हैं, right? Yes. See, what you have to do is um, uh, not for you, I think. Have you got the links? I don't know, I have deleted or what. लेकिन आपको links मिले हैं क्या? व्हाट्सएप में भेजे गए थे गूगल क्लासरूम इनविटेशन के लिंक्स. हैव यू गॉट? अगर मिले हैं तो प्लीज उन लिंक पे ज्वाइन कीजिए, उन लिंक पे जाके ज्वाइन कीजिए एंड यू विल ज्वाइन टू अ गूगल क्लासरूम. वहाँ पे आप अपना होमवर्क अपलोड कर सकते हो. ओके. यस. सो everyone, have you understood everything whatever I have taught you today? Fifth, sixth, seventh, have you understood everything? Okay. So we are going to stop over here for today. You can leave now. We'll let you know about the next class. Okay. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Hello, hello, hello. Hello, ma'am. Yes, Ishan. Yes, ma'am. Actually, what happened? I got a power cut. So I'm connected with the mobile phone. Okay, okay. It's So fine. I have, okay, I have, yes, we have finished the class. Now you all can leave. Okay. Have you got about your homework? Actually, Google Classroom links are there on your WhatsApp group. एंड उनका कुछ टाइम पीरियड होता है आई थिंक. तो अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आप हो पाओगे या नहीं. लेट्स सी. अगर है ग्रुप पे तो ट्राई टू ज्वाइन. ओके. अदरवाइज आई विल आस्क मैम टू सेंड देम अगेन. ओके. सो नाउ यू ऑल कैन लीव. बाय बाय. bye, Bye, ma'am. ma'am. बाय. बाय.